Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakti Vrindavan. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakti Vrindavan. Adventures. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakti Vrindavan. Om Agyantimirandasya Ginan Gina Shilakaya Chaksun Militam Jena Tasmai Sri Chaitanya Maro Vishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadanti Stavadanti. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Deity Gadadhar Srinivasa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We're speaking from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 22, text number 28, 128. आज हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं. It's translated? Yeah. Yes? Oh. How come no one? Rasika. Sadhusanga Nam Kirtan Bhagavat Ashraya Shravana Mathura Vasa Shrimutira Shradaya Sevana. One should associate with devotees, chant the holy names of the Lord, hear Srimad-Bhagavatam, reside at Mathura, and worship the Deity with faith and veneration. So essentially, these are the 5 principal activities in our Krishna conscious movement. कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग यह श्लोक बताता है. They're very powerful because they wake up the sleeping soul. आध्यात्मिक रूप से सोए हुए आत्मा को जगाने के लिए ये पांचों अंग अत्यंत प्रभावशाली हैं. One of our great acharyas, Srila Bhaktivinoda Thakur, he sings Jeev Jago, Gaur Chandra Boli. Lord Chaitanya, the Yuga avatar, is appealing to the people of this planet. Wake up, wake up, wake up, sleeping souls. How long will you sleep in illusion? श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीव जागो गीत में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के युग अवतार हैं, सभी जीवों को कह रहे हैं, उठो, जागो, अपनी आध्यात्मिक सोई हुई अवस्था को छोड़ दो. There's many definitions of illusion. There's many definitions of illusion. बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती है मोह क्या होता है. But for us, the primary consideration is that illusion basically means we've forgotten who we are, we've forgotten who is Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and what is our intimate, loving relationship with Him. लेकिन सबसे बड़ा मोह है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है यह भूल जाना और हमारा उनके साथ क्या संबंध है यह भी नहीं जान पाना. This is the essence of illusion. ये मोह का सार है. I've forgotten who I am as a spirit soul. मैं भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ आध्यात्मिक रूप से. I've forgotten the all-blissful Supreme Personality of Godhead. मैं सर्व आनंदमय भगवान श्री कृष्ण को भूल चुका हूँ. And I've abandoned my intimate, loving relationship with Him. और मैंने अपने बहुत ही प्रेममय घनिष्ठ संबंध को भगवान के साथ त्याग दिया है. What is the result of that illusion? इसका परिणाम क्या है इस मोह का? I find myself here in the material world. मैं अपने आप को इस भौतिक जगत में पाता हूँ. This is the place for forgetful souls who've forgotten who they are, who is God, and what is a relationship with God. This is where you come. यह भौतिक जगत उन जीवों के लिए है जो भगवान को भूल चुके हैं और एक दूसरे को भुलाने में मदद कर रहे हैं. Just like a criminal, when he disobeys the laws of the government, he commits a crime, they send him to the jail. जैसे कोई कैदी होते हैं, शासन के नियम तोड़ने के कारण जेल में जाता है,
वैसे ही यह अवस्था है। So, dear Prabhus, we're all living in the jail of material existence. I'm sorry to tell you. हे मेरे प्रिय प्रभुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब जेल में हैं। We've lost our freedom हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी है to serve God in a very intimate, loving way. भगवान को प्रेममय संबंध के द्वारा And सेवा करने की, we're struggling in this prison house of material existence. और इस भौतिक जगत के बद्ध कारागृह में हम संघर्ष कर रहे हैं। Abrahma bhuvana loka purno arvito arjuna mamupoite kontiya purna janma nevidyate. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery where repeated birth and death take place. Birth, death, birth, death. ब्रह्मलोक से लेके सबसे नीचे वाले पाताल लोक तक सारी जो लोक हैं वो पुनर्जन्म के अलग-अलग स्थान हैं। Like a prison has four walls. जैसे कारागृह में 4 दीवारें होती हैं, So high you can't get out. इतनी ऊंची होती है कि कोई भाग नहीं सकता। So there are 4 walls, realities in this world that no one can overcome except by the mercy of Bhagavan. अगर भगवान कृपा ना दे तो इस जीव का कोई भी बद्ध जीव ऐसे ही कुछ 4 दीवारें भगवान ने बनाकर रखी हैं, उसको लांघ नहीं सकता। Birth, जन्म, disease, व्याधि, old age, वृद्धत्व, and death. मृत्यु, These are 4 realities. ये 4 सत्य हैं। Science and technology can make life a little easier in the prison house of material existence. विज्ञान और तकनीकी विकास हमारे जीवन को थोड़ा सुलभ और सुखद बना सकता है। But science and technology, you can't escape birth. फिर भी उसके द्वारा हम जन्म को टाल नहीं सकते, You can't escape disease. व्याधि को टाल नहीं सकते, You can't escape old age. वृद्धत्व टाल नहीं सकते, And you can't escape death. और मृत्यु को टाल नहीं सकते। So isn't it? We're in a prison house of material existence. क्या अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम कारागृह में हैं इन 4 दीवारों के? All because we've forgotten ourselves as spirit souls. We've forgotten God and a very intimate, loving relationship. So you fall down from the spiritual world to Pune. क्योंकि हम अपने आप को आत्मा के रूप में भगवान को और हमारे उनके साथ दिव्य संबंध को भूल चुके हैं, इसलिए हमारा उतने सुंदर आध्यात्मिक जगत से यहाँ पतन हुआ है पुणे में। So how to get out of this prison house of material तो existence? इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे पाएं? Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat, Shravana, Mathura Vasa, Shimutura, Shradaya, Sevana. You associate with sadhus. साधुओं का संग करना चाहिए, You chant the holy names of Krishna. भगवान का श्री हरि नाम स्वीकार करना चाहिए, You hear the Grantaraj, the king of all scriptures, Srimad-Bhagavatam. सारे ग्रंथों के राजा श्रीमद् भागवत का अध्ययन श्रवण करना चाहिए। Amala Purana means it only deals with pure love for God. भागवत अमल पुराण है, केवल भगवत प्रेम के बारे में ही चर्चा करता है। And you reside in a holy place like Mathura or Vrindavan. और हमें पवित्र तीर्थ स्थानों में वास करना चाहिए, जैसे कि वृंदावन या मथुरा। And you worship the deity with faith and veneration. और भगवान के श्री विग्रहों की आदरपूर्वक श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। Of course, we're not in Mathura. अभी हम मथुरा में तो है नहीं, We're not in Vrindavan. वृंदावन में है नहीं हम, We're not in Srirangam. हम श्रीरंगम में नहीं, We're not in Tirupati. तिरुपति में नहीं है, We're not in Varanasi. We're in Pune. हम वाराणसी में भी नहीं है, पुणे में बैठे हैं। What sacred river runs through this place? इस पुणे के बारे में क्या पवित्रता है? I don't know. I mean, obviously some of Bhagavan's pastimes must have taken place here in the annals of time. और कोई हो सकता है कि कुछ अच्छी लीलाएं यहाँ घटित हुई हो प्रभुपाद जी की, But mainly it's a city of business. लेकिन यहाँ का मूल कारण जो है लोगों का आने का वो है व्यवसाय, People, पैसे कमाना। you can make money here. If you can tolerate the traffic, you can make money here. पुणे के ट्रैफिक को अगर तुम झेल सकते हो तो थोड़े पैसे बना ही लोगे। But we can make it into a sanctified place by following these 4 angras or limbs of devotional service. लेकिन इस शहर को हम पवित्र बना सकते हैं अगर इन 5 अंगों को स्वीकार करेंगे भक्ति के। Just like our great saint Bhaktivinoda Thakur. भक्तिविनोद ठाकुर हमारे महान संत हैं।
He was a great devotee. He was the pioneer of this movement to spread the holy names all over the world. वो एक महान भक्त थे और इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के आद्य प्रचारक थे. Modern day saint, modern day pure devotee. आधुनिक संत, आधुनिक He, शुद्ध भक्त. in the 1800s, he worked in the British government. 1800 की शताब्दी में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे. You have to do some work to survive, so he was a magistrate. कुछ कार्य करना ही होता है अपनी जीविकाशा चलाने के लिए. वो He- मैजिस्ट्रेट थे. He was not a sannyasi, he was a grihastha with a beautiful wife and 12 children. और वे कोई सन्यासी नहीं थे, वे गृहस्थ थे, उनकी सुंदर पत्नी थी और 12 बच्चे थे. But he was very strict sadhaka. लेकिन फिर वे बड़े कड़क साधक थे. He associated with devotees. भक्तों का संग करते, He chanted the holy names of the Lord. हरिनाम जप करते, He studied and commented on the Srimad-Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते, उस पर टीका टिप्पणी लिखते. He made his home a holy place उन्होंने अपने घर को ही तीर्थ स्थल बना दिया, by worshiping the deity of the Lord. भगवान के श्री विग्रह की सेवा करके. So he said one day, एक दिन उन्होंने कहा, one day I woke up and I saw my house had been transformed into Vaikuntha. एक दिन मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरा पूरा घर वैकुंठ में परिवर्तित हो गया है. How could this house transform into the spiritual world? Vaikuntha means in Sanskrit, that place where there's no anxiety. ऐसा कैसे हो सकता है कि घर किसी का वैकुंठ यानी ऐसी जगह जहाँ कोई चिंता नहीं. We live in Kunta. हम लोग कुंठ में रह रहे हैं. Huh? If someone asks you, could you please give me your address? Yes, Kunta. आपको कोई पूछता है, आपको बता दीजिए, आप लिख कर दे सकते हो कुंठ. Excuse me, what town do you live in? कौन से गांव में रहते हो आप? What street number do you live कौन सा on? रास्ता है? Where is your house? कौन से घर है आपका? No, elegance is truth spoken concisely. एलोक्वेंस यानी वाग्मिता वो ये है कि हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा सार समझा सकें. Sir, you write this down. I live in Kunta. What does that mean? I live in anxiety, stress all the time. You see, I'm 40 years old. My hair is already gray. कोई तुम्हारा पता क्या है तो हमें बोल देना चाहिए. मैं कुंठ में रहता हूँ, हमेशा चिंताग्रस्त रहता हूँ, 40 साल का हो गया, सर के सारे बाल चले गए. So here's an example of someone who's not necessarily living in a holy place, but by dint of his holy activities, he transforms the place he lives into Vaikuntha. This is the secret of Bhakti Yoga. भक्त जो है अपने भक्ति में गतिविधियों के द्वारा भौतिक जगत में रहते हुए भी उसे आध्यात्मिक जगत में परिवर्तित कर देता है. ये बहुत बड़ा रहस्य है भक्ति का. Material things used in the service of the Lord become spiritual. It's called tadiya. Tadiya means that material object which is used in seva to Bhagavan, it becomes spiritual. भौतिक वस्तुएं जो भगवान की सेवा में जुड़ती हैं वो आध्यात्मिक बन जाती है, उसे तदीय कहते हैं. Like you take a cold piece of steel, अगर आप किसी स्टील के लोहे के रॉड को लेकर you put it into burning fire, उस ठंडे रॉड को गर्म अग्नि में तपाओ, you take it out, बाहर निकालोगे, it's burning fire वो खुद अग्नि में परिवर्तित होगा. by association. केवल संग के कारण. So by association, that which is material becomes spiritual, by the mercy of the Lord. ऐसे ही हर भौतिक वस्तु संगति के कारण आध्यात्मिक बन सकती है भगवान की कृपा के कारण. And the art of that work is described in this verse. Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat, Shravana, Mathura Vasa, Shri Mathura, Shraddhaya Sevana. You just follow these 5 things. Your house will also turn into Vaikuntha. You'll wake up one day and say to your wife, darling, no more stress, no more anxiety, we have no problems. We're happy, yes? तो यह एक बहुत बड़ी कला है. इस पंचांग भक्ति के अंगों के द्वारा आप अपने घर को ही वैकुंठ बना सकते हो. एक दिन सुबह आप जल्दी उठोगे और अपनी पत्नी को देखकर कहोगे, प्रिय, मुझे लग रहा है कि हमारा सारा घर बिना चिंता का बहुत ही सुंदर आनंदमय बन चुका है. And all of you in this great country of Bharat, you should take advantage of those special holy places, like Vrindavan, like Mathura, like Mayapur, like Jagannath Puri. When you go on vacation, don't go to some materialistic place. I meet so many Indians in Florida. I say, where are you going? They say, we're going to Disneyland. Excuse me?
You could have gone to Vrindavan. You could have gone to Mathura. No, we want to have fun. We're going to Disneyland. भारत के लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वो भगवान की कृपा से भारत में जन्म लिए हैं, जहाँ वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, मायापुर ऐसे धाम हैं भगवान के। कभी मैं लोगों से पूछता हूँ छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो, लोग बोलते हैं डिज्नीलैंड जा रहा हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, भारत में रहते हुए तुम वृंदावन नहीं जा रहे हैं? When you have time, visit the holy dhams because they're very powerful. Whatever seva, whatever spiritual practice you do in a holy dham, the benefit is magnified by 1,000 times. If you chant 16 rounds, you get the benefit of 16,000 rounds. Shri Krishna Sankirtan Yagya Ki! I live in Vrindavan. I better see your faces there. Not Jai 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 and you go to Disneyland. No. You can't cheat Krishna. अगर आपके पास समय है तो आपको जरूर धामों में जाना चाहिए भगवान के, और वहाँ जाकर आप अगर भक्ति करोगे उसका 1000 गुना फल मिलता है। अगर आप 16 माला करते हो, 16,000 माला करने का सुकृति मिलता है। मैं खुद वृंदावन में रहता हूँ, यहाँ सिर्फ जय जय नहीं बोलना, मैं देखूंगा कि तुम लोग आए हो कि नहीं वृंदावन, हालांकि डिज्नीलैंड चले गए। Regarding living or visiting, it's just as good a holy dham. Hari Bhakti Vilas, one of our great scriptures, Hari Bhakti Vilas, says the following. I found this verse this morning. हरि भक्ति विलास एक महान ग्रंथ है, मुझे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक उसमें मिला। Our sacred books, they're like treasure chests with valuable jewels inside. हमारे दिव्य ग्रंथ जो हैं वो मानो रत्नों के समान हैं, और ऐसा बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है। Jewels of knowledge. ज्ञान के रत्न। Those are the real jewels, the real opulence. ये वास्तविक रत्न हैं। One great saint, he told me, the opulence of night is the moon. जैसे रात्रि का आभूषण है या ऐश्वर्य है चंद्रमा। The opulence of a family is a beautiful, chaste wife. कुटुंब का आभूषण या ऐश्वर्य है एक पतिव्रता पत्नी। The opulence of a kingdom is a pious ruler. किसी राज्य का ऐश्वर्य है एक पुण्यशाली राजा। But knowledge, transcendental knowledge, is the opulence of everything. लेकिन दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सभी चीजों में श्रेष्ठ है। So the Vedic scriptures say the knowledge is go to Vrindavan, run to Vrindavan. हमारे शास्त्र कहते हैं हमें वृंदावन जाना चाहिए, दौड़कर जाना चाहिए। And here's a valuable jewel in that treasure chest of knowledge that I discovered this morning that's more valuable than 1,000,000 crores of rupees. हरि भक्ति विलास का जो श्लोक मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो हजारों करोड़ों रत्नों से भी मूल्यवान ऐसा रत्न है। Hari Bhakti Vilas says, one who says to Krishna with feeling from his heart, जो व्यक्ति कृष्ण को अपने दिल से पुकारता है, Krishna, I belong to you, and who joyfully travels to holy places, और आनंदपूर्वक तीर्थस्थलों में जाता है, related to the Supreme Lord, भगवान के संबंधित is to be considered a fully surrendered soul. उसे पूर्ण शरणागत भक्त मानना चाहिए। Huh? One who says to Krishna with feeling from his heart, Krishna, I belong to you, and who joyfully travels to holy places related to the Supreme Lord, he's considered Atmanivedanam, fully surrendered soul. Hari Bhakti Vilas. हरि भक्ति विलास कहता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के धामों में यह कहते हुए कि भगवान मैं आपका हूँ विचरण करता है, उसे पूर्ण आत्मनिवेदन किया हुआ शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए, शरणागत माना जाना चाहिए। Srila Prabhupada encouraged us to preach in this world. रूपा जी ने प्रचार के लिए कुछ दिया है हमें। He made one eternal phrase, distribute books, distribute books, distribute books. बहुत फेमस फ्रेज है रूपा का, मेरी पुस्तक वितरित करो, पुस्तक वितरित करो, पुस्तक वितरित करो। At the same time, he wanted us to become pure devotees. फिर भी रूपा जी की आंतरिक इच्छा थी कि हम सब शुद्ध भक्त बनें। He wanted us to go back to Godhead. इसी जन्म में भगवत धाम जाएं। One time, one of my godbrothers said to Prabhupada, Srila Prabhupada, I want to take birth after birth after birth in this world just to distribute your books. एक भक्त ने रूपा जी से कहा, रूपा जी, मैं पुनः जन्म लेना चाहता हूँ इस जगत में केवल आपकी पुस्तक वितरण करने के लिए। Prabhupada, that's a very nice service, but that's not what I want, that you take birth after birth. I want you to become a pure devotee
and go to Goloka Vrindavan to serve Radha and Krishna. रूपा जी ने कहा ये भाव अच्छा है कि जन्म जन्मांतर में पुस्तक वितरण करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वास्तविक इच्छा यह है कि तुम इसी जन्म में भगवत धाम चले जाओ, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। Like Narottam Das Thakur, he was a powerful preacher, but he was a very deep rasic devotee. नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे ही एक भक्त हैं जो बड़े रसिक तरीके के हैं। O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. Krishna, I'm feeling all vacant in the world, in your absence. We want to encompass that, we want to feel that, we want to have that love for Krishna. भगवान श्री कृष्ण, आपके नाम लेते समय मुझे आपसे बहुत विरह महसूस होता है, मेरे आंखों से निरंतर अश्रु बहते हैं, कब आपसे मैं मिलूंगा, इस विचार से मैं व्यथित रहता हूँ। So therefore you should visit Vrindavan, इसीलिए आपको वृंदावन जाना ही चाहिए। the abode of love. The abode of love. The प्रेम का धाम। Huh. Actually, Prabhupada invites us all to come to Vrindavan. रूपा जी हम सबको न्योता दे रहे हैं, वृंदावन आओ। Srimad-Bhagavatam, 5th canto, 13th chapter, text number 8. 5:13-8 श्रीमद् भागवत कहता है। He writes, रूपा लिखते हैं, one must go to the Vrindavan forest वृंदावन के वनों में जाना ही चाहिए and take shelter of Govindaji. गोविंद जी का आश्रय लेना चाहिए। That will make one happy. ये हमें आनंद देगा। The International Society for Krishna Consciousness is therefore constructing a Krishna Balaram temple अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसीलिए कृष्ण बलराम मंदिर बना रहा है वृंदावन में। in Vrindavan वृंदावन में to invite its members as well as outsiders अपने सदस्यों को समाज के साथ में बाहर के लोगों को भी to come and live peacefully आकर यहाँ शांति से रहिए in a spiritual atmosphere. आध्यात्मिक वातावरण में। You have an invitation from a pure devotee. एक शुद्ध भक्त से आप सबको ये आमंत्रण दिया गया है। Then his concluding words. और फिर उनके समारोह के शब्द हैं। That will help one to become elevated to the transcendental world and return back home. Not Pune. Return back home. Not Mumbai. Not Delhi, of all places. But back home, back to Godhead. Key! 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 व्यक्ति को वृंदावन जाकर ऐसा आश्रय लेना उसे अधिकार प्रदान करेगा कि एक दिन जरूर वो भगवान के ओरिजिनल मूल धाम में प्रवेश कर पाएगा, वापस पुणे, मुंबई या दिल्ली नहीं लौटेगा। So many holy places in your country. Why is Prabhupada inviting us to Vrindavan? इस भारत में इतने सारे तीर्थ हैं, रूपा जी वृंदावन को ही क्यों बता रहे हैं? Because that's the home of Swayam Bhagavan, your father, your eternal lover, your ever well-wisher, Krishna. क्योंकि श्री वृंदावन धाम आपके शाश्वत पिता, मित्र और अत्यंत स्नेही का घर है। शाश्वत घर। Krishna says in Gita that he's the seed-giving father of all created beings. कृष्ण कहते हैं सारे जीवों का मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। Not just people of India, but Denmark, Canada, America, North Korea. भारत के ही नहीं, डेनमार्क, कनाडा, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के भी लोग। Not only humans, but cats, dogs, birds, elephants. केवल मनुष्यों का ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, जानवर का भी। Eka, there's one Supreme Personality from whom all that is material and all that is spiritual is coming. ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं भगवान जिनसे सब कुछ जितना भी भौतिक है, आध्यात्मिक है, सब उत्पन्न होता है। Aham sarvasya prabhavo matta sarvam bhavartate. Krishna says that everything that is material and spiritual comes from me. That means each and every one of us. कृष्ण कहते हैं सब कुछ मुझसे उद्भूत है, यानी कि हम सब भी। We have the same Father. हम सबके एक ही पिता है। Now if you have the same Father, that means you're brothers and sisters. तो हम सब एक दूसरे के भाई बहन हो गए। This is the peace formula for the world. ये शांति का सूत्र है जगत के लिए। We're all brothers and sisters. We have one common Father. हम सब भाई बहन हैं और हमारे एक ही सबके पिता हैं। Culturally many, but spiritually one. सांस्कृतिक रूप से हो सकता है अलग-अलग लगता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से एक ही पिता। It's nice there's different cultures in your country of India. It's nice there's different cultures and languages around the world. Variety is the spice of life.
संस्कृति में इतनी विविधता दिखाई देती है, चाहे भारत में हो या विदेश में हो, लेकिन ये संस्कृति की विविधता हमारे जीवन का सही मसाला है, जिससे आनंद आता है. But the absolute truth, culturally one, spiritually one. We're all brothers and sisters. We have the same God. This message of Godhead has to go to every country in the world. And that's what the International Society for Krishna Consciousness is doing. Not mundane material welfare, spiritual welfare. इतनी विविधता है, लेकिन एकता किसमें है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं. यह जो संदेश है हमें हर जगह पहुंचा देना चाहिए. इसके द्वारा ही समाज में शांति स्थापित होगी. One newspaper reporter asked Prabhupada, but if you're successful, there'll be no one left in the world. Prabhupada said, that's the point. एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से कहा, अगर आपकी मिशन में आप सक्सेस यश प्राप्त कर लिए, तो भौतिक जगत में कोई बचेगा ही नहीं. प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ. We'll liberate the jailhouse of material existence. सारे बद्ध जीवों को हम मुक्त करना चाहते हैं. It's a big jail. Somebody comes, opens the doors, and then all the prisoners run out. That's what we'll do, but we won't go commit more crimes. We'll go back home, back to Godhead, and serve Radha and Krishna in the beautiful kunjas of Vrindavan. Kunja Bihari. जैसे जेल का कोई दरवाजा खोल दे और सारे कैदियों को मुक्त कर दे, ऐसे ही प्रभुपाद जी हम सबको मुक्त कर रहे हैं. गुनह की काम करने के लिए नहीं, क्राइम करने के लिए नहीं, केवल राधा कृष्ण की दिव्य सेवा भगवत धाम में जाकर उनके कुंजों में करने के लिए, कुंज बिहारी की सेवा करने के लिए. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivardhari Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana. This is the Vrindavan, the spiritual world. यही वृंदावन है जो ये गीत वर्णन करता है. That's where we belong, but you have to change your heart. You have to fall out of love with this nasty world into love with the spiritual world, which is eternal, full of knowledge and bliss. हमें इस धाम को प्राप्त करना है. भौतिक जगत के प्रति जो हमारा गहरा प्रेम है, उसे त्याग करके भगवान के और उनके धाम के प्रति प्रेम को बढ़ाना है, जो शाश्वत, जीवन, आनंदमय और सत्य है. Krishna created this world, कृष्ण ने इस जगत की निर्मिति and he put his stamp on it. और इसके ऊपर एक थप्पा मार दिया है. Like if you buy something with a government stamp, you can pretty well rest assured it's okay, it's authorized. जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट आता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का सील होता है, तो So- पता चलता है कि सही है. Krishna created, they put a stamp. This product is Dukalayama Sasvatam. It's a temporary place with so many miseries. कृष्ण ने भी भौतिक जगत के निर्माण करते समय इसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है. दुखालयम अशाश्वतम. यह क्षणभंगुर है और ये दुखों का सागर है. There must be some alternative. इसका कोई उपाय होना चाहिए. There must be some alternative. दूसरा कोई उपाय होना चाहिए. And Vedic scriptures describe Parastasmatu bhavanyo vyakto vyaktat shanatana. Beyond this world, which is sometimes created and sometimes unmanifest, there's a world which is eternal. Here it's sometimes created, sometimes destroyed. Created, destroyed. There's a world which is eternal, full of knowledge and bliss. भगवद गीता बताती है कि इस व्यक्त और अव्यक्त होने वाले भौतिक जगत से भी परे एक सनातन आकाश है, जिसमें सनातन अनेक भगवान के धाम हैं, जो सच्चित और आनंदमय हैं. Where every word is a song, जहाँ हर शब्द गीत है, where every step is a dance, हर एक पद एक नृत्य है, where the flute is the constant companion, जहाँ वेणुवादन की ध्वनि हमेशा सुनाई देती है, and every day is a festival. और हर दिन एक महोत्सव है. Every word's a song. सोचिए, एक हर एक शब्द गीत के रूप में. My dear daughter, please rise, take your prasad and go out with the cows. My dear mother, thank you so much. I love you, but mostly I love Krishna. माता पुत्री से कहती हैं कि प्रिय पुत्री, तुम गैया चराने बाहर चलो. तो पुत्री कह रही है कि मैं देखूंगी कि कृष्ण की आज इच्छा कहाँ है, वो कहाँ है, उसी समय वहां पर जाऊंगी. That place is surcharged with love. भगवान का धाम प्रेम से आपूरित है. And one can experience that love when one goes to a place like Mayapur, Jagannath Puri, or Vrindavan. Even an unconscious traveler, he'll understand something special about this Vrindavan
with 7,000 temples, with goshalas and sadhus and desire trees. हमने बहुत सारे धामों में विचरण किया है, जगन्नाथ पुरी धाम, मायापुर धाम इत्यादि। लेकिन जो भी वृंदावन में आते हैं तो वहाँ की विशेषता जरूर महसूस होती है। वहाँ के 7,000 मंदिर, बहुत सारी गौशाला हैं, इतने सारे साधुगण। So potent, you'll feel something. इतना शक्तिशाली है, आपको अनुभव होगा। There's a nice verse in Padma Purana. पुराण में एक श्लोक है, The Lord may offer liberation भगवान मुक्ति सहजता से दे दे, or even material happiness to a devotee. किसी भक्त को भौतिक सुख भी दे। But once one has rendered devotional service in Vrindavan, particularly during the month of Kartik, अगर कोई वृंदावन धाम में कार्तिक के महीने में कोई विशेष भक्ति सेवा करता है, from that time on, that devotee hankers only for pure devotional service. वह भक्त उस दिन से केवल शुद्ध भक्ति के लिए ही कामना करने लगता है। Get ready, you're going to have a change of heart. तैयार हो जाइए, आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। You're going to go to Vrindavan and you're going to have a change of heart. When you come back home, nothing material is going to really attract you. You're just going to want Krishna, 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 Krishna. Hey! You become mad with love of God. अगर आप वृंदावन जाके फिर वापस लौट आओगे तो देखोगे कि आपकी चेतना में सतत कृष्ण 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 चल रहा है। भौतिक जगत का कोई चीज आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। Of course, generally, we think that only advanced souls, pure devotees, live in these places like Vrindavan or Mayapur. सामान्यतः हम सोचते हैं कि केवल शुद्ध भक्त ही वृंदावन में जाके वास कर सकते हैं। But no, even materialist atheists, come on to Vrindavan. I don't want to go. Go there. All right, just go for a visit. I'll have a limca or something. यहाँ तो कहा जा रहा है भौतिकवादी आसक्त व्यक्ति या नास्तिक भी जा सकते हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, नहीं जाना ही चाहिए तुम्हें। Everyone's welcome to Vrindavan. हर एक व्यक्ति का स्वागत है वृंदावन में। In Srimad-Bhagavatam 4:8-42, Prabhupada writes, भागवत के 4:8-42वें श्लोक में कहा है, unless one is very advanced in spiritual life, it is recommended that he live in a holy place like Prayag, Mathura, or Vrindavan. जब तक कोई आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगत नहीं है, उसे प्रयाग, मथुरा या वृंदावन में वास करना चाहिए। Now, in that particular purport, Prabhupada doesn't mention Mayapur. उस तात्पर्य में प्रभुपाद मायापुर का जिक्र नहीं करते। It's interesting. He just says, even if you're not very advanced, go to Prayag, go to Mathura, or go to Vrindavan. प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप बहुत प्रगत भक्त भी नहीं हो, तो भी जाइए, प्रयाग, मथुरा या वृंदावन में रहिए। But we would say, and Prabhupada would back this up, go to Mayapur as well. और हम कह रहे हैं कि साथ में मायापुर भी जाइए। Yeah, but it didn't say that in the purport. That's okay, because the acharyas say there's no difference between Vrindavan and Mayapur. They're identical, they're the same. कोई कहेगा नहीं ये तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं तात्पर्य नहीं, लेकिन हमारा तर्क है कि प्रभुपाद जी ने कहा है वृंदावन और मायापुर एक दूसरे से अभिन्न हैं। Narottam Das Thakur sings, नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, Shri Goda Mandala Bhumi Ye Jhane Chintamani Tarahaya Bharja Bhumi Vasa. One should also know that Gaur Mandala Bhumi, the place where Mahaprabhu appeared, is equal to Braj Bhumi or Vrindavan. Narottam Das Thakur. नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौड़ मंडल भूमि यानी मायापुर धाम जहाँ चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, यह ब्रजमंडल से वृंदावन धाम से अभिन्न है। And I'll finish this lecture with a little story in that regard. इस प्रवचन को मैं कथा से विराम दूंगा। Sometimes it's hard to hear philosophy, at 9 o'clock at night after a hard day of work, or a Sunday where a Saturday you've been with your family. Too much philosophy? शनिवार के दिन रात को 9 बजे अगर कोई आके बहुत ज़्यादा फिलोसफी तत्वज्ञान सुनाए तो हम आलस देंगे, कहेंगे कि थोड़ा बोर हो रहा है। So sometimes a little story to illustrate a point makes it easier, and then prasadam. इसीलिए एक कथा जो Mommy, this Swami went on for 4 hours. मैं एक कथा सुनाऊंगा और उसके बाद प्रसाद होगा। ये स्वामी और ज़्यादा नहीं घंटे तक सुनाएगा कुछ।
So here's a nice pastime to show there's no difference between Vrindavan and Mayapur. Why? Because the Supreme Personality of Godhead appeared in both places. एक ऐसी लीला जो दर्शाती है कि कैसे वृंदावन धाम और मायापुर अभिन्न हैं. Krishna appeared in Vrindavan, Srimad-Bhagavatam, and Radha Krishna appeared in Mayapur as Chaitanya Mahaprabhu. Shri Krishna Chaitanya, Radhe Krishna, Nai Anga. The same Krishna. He appeared in both places, so there's no difference. So on your next vacation, you can flip a coin. Mayapur, next year, Vrindavan. They're non-different. Just don't flip the coin Disneyland. Please. After this lecture, if any of you go to Disneyland, I'll make some curse on my Brahmin thread. We had a horrible time. That's because Indra Swami cursed you. I wouldn't do that. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasri, Gaur Bhakta Vrindavan. भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन धाम में अवतरित होते हैं वही भगवान श्री कृष्ण मायापुर में अवतार लेते हैं. राधा कृष्ण नहीं अन्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण हैं. और इसके बाद आप कभी छुट्टी का समय आए तो एक कॉइन उड़ाकर उसका देख लेना छापा है काटा है कौन सा है उसके अनुसार आप एक बार वृंदावन एक बार मायापुर जरूर जाना. लेकिन कुछ भी हो जाए बिल्कुल डिज्नीलैंड नहीं जाना. अगर आप लोग डिज्नीलैंड चले गए तो मैं अपने ब्राह्मण थ्रेड पे जब गायत्री कर रहा हूँगा तो आपको कोई श्राप दे दूँगा. ये मैं किसी मजाक के रूप में कह रहा हूँ, ऐसे सीरियसली नहीं करूँगा. I think our translator is doing really good. Let's give him a big applause. Here's the pastime to show there's no difference between Vrindavan and Mayapur. यहाँ एक लीला है जो बताती है कैसे वृंदावन और मायापुर में कोई अंतर नहीं है. Once upon a time, there was a brahmana, a resident actually of Vrindavan, एक समय की बात है एक ब्राह्मण थे जो वृंदावन में रहते थे. who had this urge to go on pilgrimage and visit different holy places in India. उनकी आदत थी अलग-अलग तीर्थों में भ्रमण करके तीर्थस्थलों को भेंट देते. He went here, he went there, he went everywhere, and eventually he found himself in Bengal. वो यहाँ गया वो वहाँ गया. एक दिन उसकी स्थिति जो है वो बंगाल में. Now, in Bengal, there's also many holy places. One in particular is Ekachakra. भारत में बहुत सारे तीर्थ हैं लेकिन एक बहुत विशेष तीर्थ है उसका नाम है एकचक्र. Ekachakra is the divine appearance place of Lord Nityananda. नित्यानंद प्रभु का दिव्य आविर्भाव स्थली है वो. He just kind of found himself there. He didn't really know the significance of the place. ये ब्राह्मण जो गया उसको तो एकचक्र धाम की महिमा मालूम नहीं थी. So someone said, you're in Ekachakra. This is a really sanctified, holy place. He said, oh, okay, can I rent a guide to take me around? तो कोई किसी ने बोला कि अरे तुम एकचक्र धाम आए हो बहुत महान जगह है ये. तो उसने कहा कि क्या मैं किसी व्यक्ति को अपने He said, yes. मार्गदर्शन दे सकता हूँ. The people said, yes, this old man sleeping under the tree here, he's the guide. He can take you around. तो लोगों ने कहा गांव के यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे सो रहा है यहाँ का मार्गदर्शक है. Actually, as you'll see, this guide was not sleeping. He was in samadhi. मैं देख रहा हूँ कि एक प्रभु जो है वो सो नहीं रहे थे वो समाधि में थे. He just finished his 192 rounds that day. उसने उस दिन 192 माला की थी. So the guide started taking him around Ekachakra. तो जो धाम दर्शक था इनको एकचक्र धाम का दर्शन करने ले गया. So at one point, our pilgrim, he said to the guide, is there anything special about this place? It just looks like jungle. उस यात्री ने उस धाम दर्शक को कहा सही में इस जगह पर कोई विशेषता है. सामान्य जंगल तो लग रहा है. What's significant about Ekachakra? इतना क्या महत्व है एकचक्र का? So the guide, he replied as follows. He said, actually, you're from Vrindavan, isn't it? There's no difference between Vrindavan and Ekachakra. तो धाम दर्शक ने कहा तुम वृंदावन से हो ना. एकचक्र धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर ही नहीं है.
This is all part of the great Nadia, the great place where Gauranga and Nityananda have appeared. It's non-different than Vrindavan. नादिया जो क्षेत्र है जहाँ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रकट हुए हैं वो वृंदावन से अभिन्न है. So the pilgrim chuckled. He said, "How can you say that? You haven't been to Vrindavan. It's a big difference." यात्री ने कहा, अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम खुद तो कभी वृंदावन गए नहीं. So guy said, no. The acharyas have said no difference between Vrindavan, Mayapur, Ekachakra. धर्मदर्शक ने कहा, नहीं आचार्यों ने बताया है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए. So, चक्र और वृंदावन एक ही है. So the pilgrim challenged the guide. He said, "Sir, if this is Vrindavan, you say it's non-different. This is Vrindavan. Show me the Jamuna River." तो यात्री ने कहा, अगर तुम जो कह रहे हो सत्य है कि एक चक्र वृंदावन है, तो दिखाओ मुझे यमुना नदी कहाँ है. If you say Ekachakra, Nadia, Mayapur, no difference in Vrindavan. This is a jungle. Vrindavan's a dry forest. Come on, show me, if this is Vrindavan, where's the Jamuna? तो वृंदावन में जो वन है उससे कहीं गुना अलग सा जंगल दिखाई दे रहा है मुझे. दिखाओ यमुना कहाँ है. So the guide said, yeah, the Jamuna is here. Actually it flows around Ekachakra. I'll go show you. धर्मदर्शक ने कहा, हाँ यमुना यहाँ पर है, एक चक्र में बहती है. So the guide led, our pilgrim to a little distance, and he came across a little stream flowing around Ekachakra. So guide was very excited, Tattvadarshi, he's a self-realized soul. He said, "Oh, Yamuna Mai ki jai, oh." He said, "Hare Krishna, Jamuna Viri." He's wandering on the banks of this river. And the pilgrim's like, "River? It's like a puddle of water. Come on." Anyway, there was enough water you could, just wade in up to your waist. So it was noon, and the pilgrim said, "All right, it's definitely not the Jamuna, but it's a body of water, so I'm going to go in there and chant my noon Gayatri." और वो यात्री कहा कि चलो ठीक है, यमुना नहीं तो सही, कम से कम कमर तक पानी में जाके मैं अपनी गायत्री तो कर लूं यहाँ पर. So he had a walking stick. He was elderly, had a walking stick. So he put his walking stick down on the bank of the river, and he went inside and he chanted his Gayatri mantra. But the stream started picking up a little speed, and while he was in there, the stream caught his stick and carried it away down the river, the stream. तो ये बूढ़ा यात्री अपनी जो चलने की छड़ी थी उसको साइड में रख के पानी में प्रवेश किया, लेकिन पानी का प्रवाह ऐसा आया कि उसकी छड़ी वहां से गायब हो गई. He finished his Gayatri. "Where's my stick? I had that stick for 20 years. I was attached to this little stream has carried it somewhere to the Bay of Bengal or something." पानी से बाहर निकला, चिल्लाने लगा, कहाँ गई मेरी छड़ी? ये प्रवाह उसको शायद बंगाल की खाड़ी में ले गया. So he was pained by the loss of his stick. 20 साल से मेरी वो छड़ी थी, दुख हो रहा है मुझे. But he continued on his pilgrimage and went to different parts of India. और फिर अपनी तीर्थ यात्रा में आगे निकल गया भारत के अलग-अलग. And 2 years later, he arrived back home in Sri Vrindavan Dham ki. 2 साल प्रवास करने के बाद वो अपने घर श्री वृंदावन धाम लौट आया. And naturally, his family members and neighbors, they all inquired, "How did your pilgrimage go? Share with us, some of the places you went." उसके कुटुंबीजन और पास पड़ोस के लोग आए, कहने लगे, कथा सुनाओ, कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या देखा. I was in Vishakhapatnam, I was in Mangalgiri, I was in Srirangam, I was in Tirupati, I was in Rameshwaram, and I went to this place in Bengal, Ekachakra, near Mayapur, Navadvip, and all those silly people, they told me it was non-different than our Vrindavan. It's 3,000 kilometers away. Ha ha ha! कहने लगा, मैं विशाखापट्टनम गया, मंगलगिरी गया, तिरुपति गया, श्रीरंगम गया, और एक अच्छी जगह गया, एक ऐसी जगह गया जहाँ एकचक्र नाम का गांव था. वहाँ के लोगों ने कहा कि वो हमारे वृंदावन से अभिन्न है. हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है?
They have this little stream going through the village, and they call it the Jamuna River. Now, at this point, I want to say that the ways of the Lord are mysterious. How the Lord inspires His devotees to advance in Krishna consciousness. How He removes all doubts from the hearts of His devotees. And so it was. One day, by the arrangement of the Lord, our friend, our pilgrim, he went to the Jamuna River to chant his Gayatri. He went way up here. Om Bur. तो ये यात्री जो था बूढ़ा कुछ दिनों बाद यमुना में अपनी गायत्री करने गया. It's flowing quite strongly. He's chanting his Gayatri like this, and all of a sudden, boom, bang, boom, something bumped into his leg. Something coming down the river smashed into, got caught between his legs actually. और वो जब गायत्री कर रहा था नदी के प्रवाह से कोई चीज बहकर आई उसके पैरों से टकराई और दो पैरों के बीच में अटक गई. He couldn't move. So he finished his Gayatri, put it around his neck, and he reached down between his legs and pulled out a stick. Getting close to the punchline here. Pulled out a stick, and his eyes opened very wide in wonder because it was the exact same walking stick that he'd lost in the stream in Ekachaka. Gaur Premanande! उसकी गायत्री कैसे तो उसने खत्म की जान ही नहीं. वो जब पानी से बाहर निकला देखा पैर में अटका हुआ है तो दिखा कि अरे वो तो वो छड़ी है जो उसने घुमाई थी एक चक्रधाम में और उसका वही 20 साल पुराना जो चलने का छड़ी है वही वहां उसको पुनः प्राप्त हो गया वृंदावन धाम के यमुना में. Gaur Premanande! Shri Maya Pranam Ekacharana Dham Ke! Shri Vrindavan Dham Ke! They're exactly identical, the same K. So at that moment he realized there's no difference between Mayapur, Ekachakra, and Vrindavan. Otherwise, how could it have been the same stick going into the Bay of Bengal, now coming down from the Himalayas in the Jamuna? It's all the arrangement of the Lord to convince him of this important fact. Don't go to Disneyland. उसको यह बात बार-बार आश्चर्यकारक लगने लगी कि जो छड़ी मैंने घुमा दी जो बंगाल की खाड़ी में जानी चाहिए थी वो पर्वत से निकलने वाली इस यमुना से होते हुए मेरे पास कैसे वापस आ गई. ये भगवान की विशेष अद्भुत लीला है मेरे संशय का निराकरण करने के लिए. इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि एकचक्र धाम जो है वो वृंदावन से अभिन्न है और हमारे लिए ये सिद्ध हो गया कि हमें कभी भी डिज्नीलैंड नहीं जाना चाहिए. That's only one of the many gifts that Srila Prabhupada has given to us, the holy dhams. We have more gifts from our acharyas than we can actually comprehend. Sometimes we lament for what we don't have when we have so much mercy at our disposal. There's no reason that everyone in this room should not go back to Godhead in this very lifetime. We have so much kripa, so much mercy. हमें शोक होना चाहिए कि इतनी कृपा की बाढ़ में भी मैं भक्ति की प्रगति को नहीं हासिल कर पा रहा हूँ. यह बहुत शोचनीय बात है. In the beginning, we just mentioned 5 things that we have: Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shravana, Mathura Vasa, Sri Mathura, Shradana, Seva. Just those 5. But we have other jewels, other nectarian, priceless gifts from this treasure chest of love of God that our acharyas have given us. इस प्रवचन की शुरुआत में हमने भक्ति के 5 अंगों को देखा: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्री मूर्ति की श्रद्धापूर्वक सेवा.
ये तो एक छोटे अंग है, ये कुछ महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इससे भी और रत्न हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए खजाने में हमारे पास उपलब्ध हैं। I'll finish with a verse by Srila Raghunath Das Goswami, in which he reveals beyond these five how many precious jewels we have to enable us to go back to Godhead in this very lifetime. मैं इस प्रवचन को समाप्त करूंगा। यह एक Raghunath Das Goswami. जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया है। I bow down to the beautiful lotus feet of my spiritual master. मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ अपने आध्यात्मिक गुरु के श्री चरणों में, By whose causeless mercy I have obtained the supreme holy name, जिनकी अभेद कृपा के कारण मुझे सर्वोच्च भगवान नाम प्राप्त हुआ है। the divine mantra, एक बहुत दिव्य मंत्र Gayatri, गायत्री, the service of the son of Sachi Mata, सची माता के पुत्र की सेवा प्राप्त हुई है, Gauranga Mahaprabhu, गौरांग महाप्रभु की, the association of Srila Swarup Damodar Goswami, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का दिव्य संग मुझे मिला है, Srila Rupa Goswami, रूप गोस्वामी का, and his elder brother Sanatana Goswami, और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी का, the supreme abode of Mathura, मथुरा जो सबसे ऊंचा धाम है, the blissful abode of Vrindavan, वृंदावन का आनंदमय धाम है, divine Radhakund and Govardhan Hill, दिव्य राधा कुंड और गोवर्धन पर्वत, and the desire within my heart और मेरे हृदय की इच्छा है for the loving service भगवान की प्रेममय सेवा करने की इच्छा, of Sri Radhika and Madhava in Vrindavan. श्री राधिका और माधव की सेवा करने की इच्छा। Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. बहुत धन्यवाद।